Good morning, students. This topic is for B.Sc. part.III students of Botany, covering Unit 2 of Paper 1. The topic for today is Crassulacean acid metabolism, known as CAM. The CAM is an adaptive photosynthetic which is prevalent in the xeric habits. Upapche, Crassulacean upapche is known as CAM photosynthesis. ये कार्बन फिक्सेशन पाथवे है जो कि सम जीरोफिटिक सैकुलेंट प्लांट्स में अडेप्ट होती है और ये प्लांट्स कैम प्लांट्स कहलाते हैं. Under natural conditions, the acidity of green shoots of some non-halophytic succulents and semi-succulent plants increase at night and decreases during the daytime. This diurnal change in acidity was first discovered in a Crassulacean plant, Bryophyllum. Hence, it has been termed as Crassulacean acid metabolism. This metabolism occurs only in green organs, and the plants which exhibit it belong to a number of different families, especially in the leaves of Bryophyllum, Kalanchoe, Sedum, Crassula, and fleshy green stems of Opuntia. In CAM plants, the stomata are open at night and are usually closed during the daytime. This pathway was first discovered by Bonner and Bonner in 1948. It occurs in hundreds of species in 20 families of angiosperms. Some of the important families are Liliaceae, Crassulaceae, Euphorbiaceae. It has been reported that though CAM is genetically controlled, it is sometimes affected by changes in the surrounding environment. अब CAM क्या है? What is CAM? CAM is a carbon fixation pathway present in some plants known as CAM plants. These plants fix carbon dioxide during the night, storing it as the 4-carbon acid malate. The carbon dioxide released during the day, where it is concentrated around the enzyme ribisco. रिबिस्को मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि ड्यूल एक्टिविटी शो करता है, एक तो कार्बोक्सिलेज की और एक ऑक्सीजनेज की. तो कार्बोक्सिलेज जब एक्टिविटी होती है इस एंजाइम की तो फोटोसिंथेसिस होता है, और जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है द प्लांट्स अंडरगो फोटोरेस्पिरेशन. CAM can be considered as an adaptation to arid conditions. CAM plants often display other xerophytic characters such as thick, reduced leaves with a low surface area to area volume ratio, thick cuticle and stomata sunken into pits. तो CAM की जो characteristics हैं वो thick leaves होते हैं और leaves इनके reduced हो जाते हैं और stomata जो है sunken होते हैं. Some shed their leaves during the day season, others store water in vacuoles. What is the overall mechanism of CAM? CAM एक 2-part cycle में ऑपरेट होती है. During the night,
The CAM plant's stomata are open, allowing carbon dioxide to enter and be fixed as organic acids, basically malate, which is stored in vacuoles. The carbon dioxide is fixed in the mesophyll cells cytoplasm by PEP, pyruvic acid reaction. During the daytime, the stomata are closed. The carbon in the organic acids is freed from the mesophyll cells of vacuoles and it enters the chloroplast stroma and thus into the Calvin cycle. तो Calvin cycle में basically 4 metabolic phases ऑपरेट होते हैं. The first phase जो कि रात में होता है, इसमें क्या होता है? The atmospheric carbon dioxide is taken up via pepcase and malic acid is synthesized. Second phase में क्या होता है? There is a transitional level in the carbon dioxide uptake जो कि मॉर्निंग में अकर होता है. In the third phase that occurs in the daytime, decarboxylation of malic acid occurs to elicit an elevated internal concentration of carbon dioxide. In the fourth phase, चौथे फेज में क्या होता है? ये अकर होता है लेट आफ्टरनून में. Both the pepcase and the ribisco-mediated carboxylations contribute to the assimilation of carbon dioxide. तो 4 फेजेस में ये पाथवे कंप्लीट होती है. पहले फेज के रिएक्शंस जो होते हैं वो रात में होते हैं. दूसरे फेज के रिएक्शंस जो होते हैं वो मॉर्निंग में होते हैं. तीसरे फेज के रिएक्शंस जो होते हैं वो डे टाइम में होते हैं और लास्ट फोर्थ फेज में जो रिएक्शंस होते हैं वो आफ्टरनून में होते हैं. तो ये कौन कंट्रोल करता है? दिस इज कंट्रोल्ड बाय द स्टोमेटल फंक्शनिंग. दिस सर्केडियन rhythm is regulated by stomatal functioning, fluctuation in malic acid and starch content, and activity of pepcase and ribisco. Now, what is the benefits of CAM? What is the significance of CAM? The most important benefit to plant is the ability of the leaves of the most of the stomata to remain closed during the day. Being able to keep stomata closed during the hottest and the dried part of the day reduces the loss of water through evotranspiration, allowing CAM plants to grow in environments that would otherwise be far too dry. तो CAM plants का जो सिग्निफिकेंस है ये कंट्रीब्यूट करते हैं हैविंग अ ग्रेट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इनका होता है क्योंकि ये स्कोटो एक्टिव प्लांट्स होते हैं. स्कोटो एक्टिव प्लांट्स जब प्लांट्स के जो स्टोमेटा दिन में बंद रहते हैं और रात में खुलते हैं. CAM has the advantage of eliminating evotranspiration through a plant's stomata. तो प्लांट्स के स्टोमेटा के द्वारा CAM प्लांट्स में एडवांटेज होता है ट्रांसपिरेशन कम करने का. अगर हम पूरे रिएक्शंस को समराइज करें तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो प्लांट्स हैं सबसे पहले प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट. जो बेसिक अडेप्टर है जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करता है वो एक फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है और जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है oxaloacetic acid is the first product of carboxylation. The carbon dioxide is stored as the 4-carbon malic acid in vacuoles at night, and during the daytime the malate is transported to chloroplast where it is converted back to
carbon dioxide, which is then used during photosynthesis. तो प्राइमरी एक्सेप्टर कार्बन डाइऑक्साइड है और फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट बन रहा है कार्बोक्सिलेशन से वो है ऑक्सलो एसिटिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड जो 4 कार्बन मैलिक एसिड में की उसमें स्टोर हो रहा है वैक्यूल्स में ड्यूरिंग द नाइट, और ड्यूरिंग डे टाइम में ये जो मैलेट बन रहा है या मैलिक एसिड जो बन रही है ये क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसपोर्ट होती है और ये वापस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है और वो जो फिर फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। पेपकेज एंड रिबिस्को प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स में पेपकेज और रिबिस्को प्रेजेंट होते हैं। इन प्लांट्स में ट्रांस एनाटॉमी नहीं पाई जाती। तो टू समराइज, CAM, the effective carboxylation with subsequent accumulation of malate and effective decarboxylation and photosynthetic refixation are largely separated in time. That is, carboxylation takes place in dark and decarboxylation and refixation take place in light. Taxonomically, प्लांट्स जो हैं 3 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, हमें मालूम है, C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स और CAM प्लांट्स। तो जो रिएक्शंस C4 प्लांट्स और CAM प्लांट्स में बेसिकली सेम होते हैं, पाथवे जो सेम होती है, लेकिन जो रिएक्शंस होते हैं वो कैम प्लांट्स में टाइम से डिफर करते हैं और C4 प्लांट्स में ये स्पेस में डिफर करते हैं। C4 प्लांट्स में मेसोफिल सेल्स और बंडलफिल सेल्स में होते हैं और कैम प्लांट्स में ये टाइम से होते हैं। स्टोमेटा during the night they remain open and they remain closed during the day. Now, what are the important points regarding CAM? CAM is only found in succulent fleshy plants, but all succulents are not CAM plants. जैसे कि मैंने पहले भी बताया, CAM पाथवे जो है केवल कुछ सकुलेंट प्लांट्स में होती है, जो फैमिलीज मैंने बताती, कैटकेसी, ऑर्किडेसी, यूफोर्बेसी. Very less transpiration occurs. In C3 and C4 plants, stomata are photoactive. C3 और C4 plants में stomata प्रकाश सक्रिय होते हैं because they open in day and close in night, क्योंकि ये रात में खुलते हैं और ये दिन में खुलते हैं और रात में बंद होते हैं। इसके विपरीत कैम प्लांट्स होते हैं, दे आर स्कोटोएक्टिव। स्कोटोएक्टिव तिमिर सक्रिय। तो कैम प्लांट्स तिमिर सक्रिय होते हैं जहाँ पर कि स्टोमेटा दिन में बंद रहते हैं और रात में खुलते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है स्टोमेटा की, it effectively reduces transpiration. The amount of starch decreases in night and increases in day. The green plants have CAM pathway, they have huge vacuoles, and carbonic acids are stored in the vacuolar sac of the vacuoles. So, this is all about the CAM plants. Thank you.